Hi, good morning. Hi, Rima. I'm going to see you in like 5 minutes. I'm just Sure. getting ready. Just I'm putting on the video of rushing down. But I Sure. will see you. Hi, how are you guys? I'm good. I want to start first today. Yes, please. After dry fasting, I told you my sugar was 117. Then yesterday it was 147. Today is 153. Ha. Kal night I had carrot cucumber juice and day before. And yesterday I had watermelon. Around 8:30. हाँ. And my sugar level almost after 24 hours is 153. हाँ. तो कुछ गड़बड़ कहीं कर रहा हूँ मैं कि क्या? And I walked also. I did walking as well. No yesterday. गड़बड़. Uh-huh. No गड़बड़. मैं कैसे एक एनालिसिस देता हूँ तुम्हें. जब थोड़ी ना ऑसिलेशंस होते हैं Okay. हर चीज में. तो अभी 117 was a very very low number. 150 is a very high number. वैसे तो लो ही है 220 के हिसाब से. But Right. you see these before everything smooth. गन्ने अब हाँ ना एनालिसिस आया. गन्ने की मशीन में जब गन्ना डालते हैं गड़ फिर उसको मोड़ता है. then they put it again, then it becomes गड़. थर्ड राउंड में it becomes गड़. चार्ज में स्मूथ आता है. तो अभी तुम्हारा गड़ चल. Okay. ठीक है. So don't stress. ये 150 140 these are all man-made numbers out of man-made machines. They were not made by God. They are not accurate. They are not inaccurate. They are good indicators. Indicator आपका क्या है यकुल? That you started somewhere here on sugar and you're somewhere here. Right. And धीरे धीरे भी somewhere here. अब वो हल्का उसमें चलता रहेगा. Don't even think about it. Don't even test. अभी 150 है, कल 120 हो जाएगा, परसों 140 हो जाएगा. Don't worry. Okay. Ignore it. अभी तो हमारा 160 170 भी जा सकता है, लेकिन वो वापस आ जाएगा. These are temporary spikes. Okay. You know sugar more than I do. It's easier said than done. I've never been a sugar guy, but this is all deficit of insulin, right? Which you take externally, and those spikes will happen. Okay. It happens with a lot of people in blood pressure, body weight. होता है ना, कई लोग घबरा जाते हैं. मेरे को हंसी आती है ग्रुप में. Many people say, "Oh, my weight has increased by 500 grams. Oh, my weight has dropped by 400 grams." अगर तुम एक ग्लास पानी पियोगे ना, 300 ग्राम का होता है वो, तो तुम्हारा वेट 300 ग्राम बढ़ गया. और आप सुबह वॉशरूम गए, अच्छे से पेट साफ हो गया, आपका 1 किलो वेट कम हो गया. Right. So these oscillations are very normal and natural, and they keep happening all the time. So don't even get into it and let the body play. And are you comfortable? Is there any discomfort? Yeah, I'm comfortable. I'm normal. I'm absolutely normal, like every day. That's all. There's nothing else, Apple. There is ठीक nothing है. else. जब कम हो जाए तो खुश हो जाओ, जब बढ़ जाए तो इग्नोर कर जाओ. लेकिन मैंने ऑर्डर गलत बोला है. जब बढ़ जाए तो इग्नोर कर जाओ, लेकिन जब कम हो जाए तो खुश जरूर हो जाओ. Okay. Okay. ठीक है. ये चेंजेस चलते रहेंगे. बॉडी वेट का भी होगा. अब जो लोग ड्राई फास्टिंग करते हैं, यू सी अ ड्रॉप ऑफ ऑलमोस्ट, if you do 2 days of dry fasting, 3 किलो जाता है पूरा नॉर्मल आदमी. Okay. 3 किलो क्या जाता है? 3 किलो में से 1.5 किलो तो पानी जाता है, हाँ जी. क्योंकि जितना बॉडी ने अब्सॉर्ब कर रखा है, और 1.5 किलो कचरा जाता है. जो 1.5 किलो पानी जाता है, वो तो जिस दिन ग्लास में पानी पियोगे उस दिन एकदम वापस आ जाएगा, क्योंकि बॉडी अब्सॉर्ब कर लेती है. Same thing with fasting. So if people who've lost 8 kilos, when you stop your juicing, out of 8 kilos, 2 kilos will come back. 6 will go permanently. And it's all about maintenance. Okay. Okay. ठीक है. So weight it was coming 90. I think there's something wrong with the machine. 90 हो गया? From 94, after 2 days I checked it as 90, but I highly doubt. I have to check another machine. Did you go to the washroom in the last 2 days? ठीक ठाक चक्कर कटे? हाँ, I went to washroom. तो अरे यार, तुम्हें खुद पता लग जाएगा तुम्हारा 4 किलो वजन कम हुआ है. You just think about the last 2 days. वॉशरूम गए, कितनी बारी गए, वो हो गया माइनस, खत्म. रात के टाइम आप जब सोना, all of you guys, hi, unmute and undo, open your cameras. Yeah, Honey, Rima, Aati,
I'll tell you something very interesting. When you sleep at night, honey, are you there with us? Aarti, you're there. Okay. So when you guys sleep at night, Yes, yes, I'm there. check your weight when you go to Okay. sleep. Okay. And you have not, when you're sleeping, you haven't eaten anything, you haven't drunk anything, you haven't gone to the washroom when you wake up in the morning. On the same bed, के नीचे weighing machine रख के देखो, your morning weight will be 200 grams less than the night का weight. जादू हो गया. Okay. कैसे हुआ? क्या हुआ? Digestion, absorb, I don't know. 200 grams, you will be less in the morning. How? Is that magic? Honey, Rima, answer that. Energy consumed probably Huh? from food. Energy consumed by the body. लेकिन energy cannot be gained or lost. Newton's law. Right. कहाँ गया सब कुछ? Input output तो कुछ था ही नहीं. Transform from weight to weight कहाँ गया? loss. Any energy cannot be created or lost. So think Right. about it. I'll give you 1 minute to think about it. वो 200 ग्राम कहाँ गया? We inhale out the thing, like ऐसे I read somewhere that fat goes out through breath. Maybe. What else? So there are four points. उनमें से Maybe one you answer sweat answer. also. Maybe you sweat and it evaporates or something. Good. So perspiration, respiration. Yeah. मेरे को क्या लग रहा है अभी? Vicky knew the answer. Had I answered before to you, Vicky? I'm sorry? Vicky, he got the right answer. My colleague Vikram. Okay. Vicky, undo your camera. Did you know the answer since I told you before, or you have actually made a wise guess? It's just a guess because that is the only thing I could think of. It goes out of the body. मैं अभी हिंट चलो विकी ने जवाब दे दिया लेकिन मैं तुम्हें हिंट देता आज रात को तुम बिना एसी के सोना सुबह तुम्हारा 300 ग्राम कम होगा क्योंकि when you're sweating there is something called natural perspiration. You know, your during your summers your skin is moist, so all that is constantly happening, right? So you tend to lose weight. अब we have some very progressive people in the group जो मैसेज डालते हैं 200 ग्राम कम हो गया 300 ग्राम तो ऐसे ही कम हो जाता है सोने में और सुबह उठ के पानी पी लो 600 ग्राम बढ़ जाता है. आई ऑल्सो नो पीपल जो पानी पीने से घबराते हैं. मैं लोगों को बोलता हूँ अगर आपकी 3 ग्लास की क्षमता है तो आप 4 ग्लास पीजिए 4 किए तो 5 पीजिए ताकि पेट अच्छे से साफ हो उसका ताड़ासन करो. कई लोग घबराते हैं कि 5 ग्लास पानी पिया 250-250 ml का ये तो 1.25 किलो वेट बढ़ गया. Right. तो वो तो जो अंदर गया बाहर तो आएगा ही. तो अगर 1200 ग्राम पानी जाएगा अंदर अपने साथ 1300 ग्राम निकलेगा ना 2-3-4 घंटे में तो निकलेगा ही. ठीक है. So don't worry, bodily movements will keep happening. 150 is an excellent score. It will come down. Your challenge Yakul will lie in maintenance. ठीक है. क्योंकि चैलेंज के दो पहलू हैं. One is that the difficult part, I'll tell you. Difficult part जो मेरे साथ भी होता है सबके साथ होगा. You will feel so strong and energetic क्योंकि जो डायबिटीज की दवाई लेनी बंद हो जाती है ना तो शरीर इतना ज्यादा पोटेंट इतना रिचार्ज हो जाता है कि कभी कभी मन में ख्याल आएगा साले जी किस ले रहे हैं. ले लो मजे लाइफ के. Right. छोड़ो यार बड़े टाइम बाद मिले हैं दोस्त आज बैठे हैं तो एक बॉटल तो हो ही जाए. You know, और ये भी हो जाए फिर कल भी हो जाए परसों भी हो जाए. 3 दिन कर लिया. थर्ड डे अगेन यू आर डूइंग इट बिकॉज बॉडी इज सो स्ट्रांग यार. बॉडी कुछ मना ही नहीं कर रही. जैसे 16 साल 20 साल की उम्र में हम क्यों बीमार पड़े हैं बिकॉज आवर बॉडीज वाज सो स्ट्रांग एट द एज ऑफ 15 16 17 और चिल्ड्रन आर 14 उनको चॉकलेट 1 दे दो 2 दे दो 4 दे दो खाते ही चले जाएंगे क्योंकि बॉडी इतनी स्ट्रांग है. आज की डेट में व्हाई वी सो पैनिकी बिकॉज कुछ भी करते हैं तो झटका पड़ता है पीछे. Correct. So what will happen with you Yakul, you will witness that 16-year-old phase. I'm sorry? You will witness that 16-year-old phase जो 16 साल की बॉडी थी ना. You will witness that अभी. उसका डिसएडवांटेज मैं बता रहा हूँ. डिसएडवांटेज ये होगा कि आप when you abuse the body one day the body will see so strong it won't respond. अगले दिन भी will abuse. फिर आदमी गलत दिशा पे चला जाता है. Right. So you have to have the best ideal. You know you are not 16 you are 40 or 50.
लेकिन शरीर अगर 16 साल की तरह साथ दे रहा है तो थोड़ा ध्यान रखो, बॉडी को वेट मत करो कि टूट ही जाए. So same thing, your maintenance will be very difficult because you would have reached such beautiful peaks in life that you will want to say, यार I am again, यार मैं तो 15 साल का बच्चा हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ. उसके Right. बाद आदमी साला 1 महीना जब पाप करता है बैक टू बैक एवरी डे, फिर दोबारा तबीयत खराब हो जाती है. All right. So that is the challenge. But the positive side also is जिस आदमी ने 21 दिन तपस्या की हो, बहुत बड़ी तपस्या है, not to eat. जिस Right. आदमी ने 21 दिन तपस्या कर ली, वो कुछ भी कर सकता है. उसने अगर ठान ली कि आज मैंने गलत किया है, उल्टा खाया है, पिया है, दोस्तों के साथ पार्टी की, एंजॉय की है, तो अगले दिन उसकी कॉन्शियस खुद बोलेगी आज सफाई है बस, आज जूस पिएंगे. So you have to Right. maintain the balance. So once you do that, Yakul, your body after this 21 days, whether it is your sugar is at 150 or 140 or at 120, whatever level it is, just remember that after you finish your juicing and when you get to OMADs, you will have to धीरे धीरे maintain it. और maintenance में और perfect आएगा. Okay. Heartbeat perfect, blood pressure normal, skin clear, पेट साफ, deep sleep, no stress, no inhibitions, मुंह पे स्माइल, यकुल एंड नरेश भाई जैसी स्माइल हमेशा, है ना. सो दिस इज द पावर ऑफ दिस एंटायर थिंग. सो वी ऑल हैव टू लर्न फ्रॉम दिस वन. वी गॉट अनदर प्रीटी फेस, हनी खंडूजा. So you Hi, guys have cheers to with my juice. She was waiting to get the juice before she could do that, right? So maintenance is something that you will all have to struggle. Honey, I was telling this one, and that's exactly what I was talking to you guys. That's what it is, right? So I uh, was one I second, was hold on. about to add. I all of you guys meet Dr. Anurag Batra. He's the owner of Business World and Exchange for Media. How are you guys? These are all Hi, Dr. Anurag. I think you we are- have met before. Yahul Patak. Yakul was a diabetic 2 weeks ago. Acha. He Oh. was a white diabetic. So Acha. they're part of my group, which I run these healing groups. Okay. Yakul is one example, live example. They're on a 21-day fast. अभी खत्म हो रहा है सबका. Yakul, how many kilos have you lost? I have lost 7.5 kgs in 17 days. When I grow up, I want to be like you. That's cute. So he's a lovely guy. So he's a comedian. He's a lovely guy. Anurag, we're all part of this conference. You know Anurag? Rima? No, I know him. From the train, Rima, you'll know him. yeah, He owns his magazines and publications and all of yeah, that. yeah, I know him, but I haven't met him earlier. हाँ, so I was in this conference. But what I'm saying is that so good fun यार. यकुल को तो देख के देखो मैं कितनी excitement हो रही है. कल I introduced Avinash आया था. I bumped into Avinash Pandey, who's the group CEO of ABP Network, the entire plan. So I was chatting with him and suddenly this call happened. Yakul to introduce him. Yakul को देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं जाहिर नहीं कर सकता. इसलिए I am, बहुत अच्छा लगता है यकुल. What you've done is so beautiful. Thank So you. beautiful Thank and so nice. It's all about sustenance, which I'm sure you will manage. you. मैं मतलब सबसे So, biggest Pankaj- role play किया है ना, this morning session of connecting every day. मेरे आपने notice किया होगा, most of the days I don't have question, but I just connect for the energy. मैं सिर्फ हाँ. हेलो ही करता हूँ mostly. मैं एनर्जी के लिए और मोटिवेशन के लिए कनेक्ट करता हूँ. So you know you are connected. You know Yeah, you yeah. have to be on this path. You have to stay on this path. मैं 2-3 One- फ्रेंड्स को कनेक्ट कराया. I've told them to join morning sessions. दे लो नहीं यार, यूजिंग करनी है 2-3 दिन कर ले तो उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे. आपके बाद क्या चलो ठीक है. There's a different energy basically when you connect. Yes. So that reason I connect. Otherwise मेरे ज्यादा क्वेश्चंस होते नहीं है. एक बिगिनिंग में थे और एक आज तक काफी दिन बाद. Is Vikram there? Yeah, Pankaj, I Pankaj. have a question. Can I Yeah. ask? Is Riya in the office? Yes, she is. She should join in. एक बड़ा interesting चीज बता रहा हूँ. You can log on. You can just put her on this. One thing is so interesting, Yakul, that Rima, we have time. We'll chat aram se. I'm there with you. So I was saying something so nice. Huh? Rima, tu सवाल पूछ. Then I'll come to the point that Yakul had raised. I want to add to that. Okay, sorry, because I have a meeting, so I want to ask this question. I haven't been. So, for me, the question is that, of course, everybody reacts very differently.
And the good part is being a pitta, I had got into this bad habit of having sweet, which I've kind of foregone. I don't have any desire to eat any sweets, and the appetite seems to have gone down. Anyway, I never had a very major appetite, but it's kind of more stable is the right word to use. So these are the good aspects, and no major issues I've had. But the aspect that I'm concerned about is maybe my body is reacting like that because of pre-meno. Is that I have lost only 3.8 kgs. So I done 9 days of juicing as planned. I'm eating raw, only two raw foods. Like in lunch, I take a few fruits and then I have a salad. No salt, no sugar. Exactly how it is decided. And from today, I'm supposed to start OMAD, but I intend not to do that and continue raw because I'm fairly comfortable doing that. So yeah, and I have been exercising about 3 kilometers of cycling in spite of my knee injury because I can't walk. So I've done 3 kilometers of cycling in the morning and about 2.5. I mean, that varies in the evening. So any suggestions there? Something I should do, or is it normal to be like that? Yeah, I have some suggestions. You're Pitta, right? Yeah, You done 60%. 4 kilos in 9 days. I lost 3 kilos in 9 days. Today I'm on the 17th day. No, अभी So तो OMAD चल रहा है ना? नहीं, आई एम नॉट हैविंग ओमैड, आई एम जस्ट हैविंग रॉ. अभी रॉ चल रहा है. आज से ओमैड शुरू करना है, बट आई एम इंटेंडिंग नॉट टू डू इट. आई इंटेंड डूइंग रॉ ओनली. No, the entire 17 days, you did 9 days of juicing, and Yeah, then you did about 7 to 8 days of raw, pure that's raw. correct. That's correct. There is no grain, there is no anaj, there's nothing that went Nothing, no salt, no sugar, no grain, no protein, nothing. Just 100% raw. 100% raw. So And net no 4, overindulgence in raw. yeah. So 4 kilos in about 16 to 17 days, right? Sorry, there was a call, so I missed that. Can you just So repeat? about 4 kilos in 6-7 days, right? No, 16, I've 17 days. lost in this raw food eating about 7 days. I lost about 800 grams. हाँ तो लॉस नहीं हुआ ना रॉ में, जूसिंग में Correct. हुआ था. Correct. And what's your body weight against your height? So my BMI is around 27. Okay. And what is your body weight? So my body weight for the first time is kind of touched 70 now. Okay. And your ideal body weight? The body weight I've always had, I've been on the thinner side, is 61. I think ideally it is 63 or something. ठीक है, तो 7 more kilos to go. Listen, Rima, how comfortable were you the juicing? See, I was fine till about 8 days. The 8th day and night and 9th were very, very low ठीक है. energy. I had a chat with you that I Correct. wanted to continue on juicing, but you said no, go raw if you're so Yeah. lost energy. ठीक है, now listen, Rima, we'll spend another week of juicing. Can you do that? I can try. कर ले because अभी body fat बहुत ज़्यादा है. You're still about 8-9 kilos above overweight. Your body is responding well to tons of juices, and the moment you get into fiber, it is still not reached. एक stage थी जो काफी लोगों को हमने समझाया था, where you do juicing, so the body mobilizes the waste, and once you pump in the fiber, it all comes out. है ना? लेकिन आपके केस में अभी वो state नहीं आया है, where the waste is being mobilized, and that could have been due to some injuries in the body. That could have been due to a lot of blockages in the intestine. You will have to give it at least a week more of juicing for that to mobilize. The moment that mobilizes, you will see a drop of 3-4 kilos. Okay. So you're saying from Because- today, the next 7 days, I go juicing. Yeah, go pure juicing for 7 days. इस 7 दिन में तेरा 2-3 किलो और कम हो जाएगा. उसके बाद तुम्हारा फिर again will get into raw. So what we will do is over the next 1 month. Rima, listen to this. It's very difficult. I'm throwing a caution again. We are extending you to the entire 1 month, which is, let's say, by the end of May. By the end of May, we want you to be 60 kilos. Okay. Which is your ideal body weight, and you'll be completely ailment free. You will be doing batches of juicing and raw. Okay. 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 तो आज आप से juicing कर लो 1 हफ्ते के लिए, उसके बाद then we'll get into raw.
Then we'll get into juicing, and hopefully if you hit 60 to 63, we will get into OMADs, 1 cooked meal a day, which can happen in 10-15 days probably. Okay. लेकिन अभी ये पूरा खत्म करना जरूरी है, and I'm not worried about the body fat. I'm worried about the fact that you haven't dropped more than 4 kilos. That means there is something blocking in the system, which will take time to come out, and it will come out. Okay. Got it? Got it. So it is not the best day for you. I'm extending it for you, but you will have to do it. It's another Okay. 10-12 days of sacrifice. All right. Okay, but overall, when you started 14 days ago or 15 days ago, 2 weeks ago, and today, do you feel any difference in your body, energy, everything? Yeah, most certainly I am more lively. Energy seems to be almost the same, but I'm more lively. I've definitely lost inches, if not on the weighing scale, but I've definitely lost in inches. I can tell you that. 2 I had a इंच lot में of 2 इंच में बहुत 2-3 इंच में बहुत फर्क पड़ जाता है. yeah, फर्क पड़ गया है. And also I've had a lot of water retention. So when I was on pure juicing, I saw that completely go. When I started on raw, I did see a bit of it come back. Let me explain all of you. Unmute and say hello, so we know we are all together. Hello. Hello. मैं तुम्हें water retention का logic बताता हूँ. Again, I repeat, I'm not a doctor, and you don't need to be a doctor. बहुत common sense की बात है. Body पानी क्यों retain करती है? Does anyone want to answer that question? For survival, पानी ना Sorry? मिले. Sir, for survival. हाँ. में प्रॉब्लम Correct. जो ऐसा करे For पानी- survival पानी ना मिले. भाभी नरेश, sorry, मैम क्या बोल रहे हैं? किडनियों में कुछ प्रॉब्लम होती है, किडनी अपना वर्क नहीं करती है, इसीलिए पानी रिटेशन होता है. करेक्ट. ठीक है. अब आप लोग को अगर पानी रिटेन करना है ना बॉडी में, आप कुछ भी पका हुआ खा लो, उस पके हुए को संभालने के लिए बॉडी पानी रिटेन करे. आप नॉन वेज खाओ, पानी डबल रिटेन करेगी. और आपको कुछ ज्यादा रिटेन करना है ना, 3 विस्की के ड्रिंक मार लो. When you drink alcohol, the body retains a lot of water. Why? So what is the body doing? Every time you're putting something which is in the body, which the body does not want to accept, it will retain water to somehow flush it out or to manage it, right? So when you're on a juice diet, the water retention goes, क्योंकि कुछ जा ही नहीं रहा अंदर negative. The body starts cleaning, right? So in your case, right now there is water retention, which is happening with the fruits and vegetables, Rima, that you are eating. When the retention is there, the fat burn will not happen. Understood? So Okay. इसलिए I'm putting you off all fruits and vegetables purely into juicing. You've done 8 days, you can do 7 more days आराम से. उसमें क्या होगा? There is something that is stuck that will come out. What is Okay. stuck? I don't know. You don't know. No one in the world knows. If someone believes कि क्या stuck है, वो बता देगा. तो बुद्धू बना रहा है. वो तुम्हारी body को ही पता है. And when it comes out, you also won't know. Right. It's a natural process, you know. And once it comes out, it'll come out with a lot of goody things in your body. You'll start feeling much more energetic. Okay, cool. Now I got my colleague Ria. Hi Ria, how are you? Hi, Pankaj. I'm super good, thank you. Tell me. Okay, we can't see you on the camera. Now we can see you on the camera. Vicky, we don't want to see your ugly face. Let Ria come. Sure. No, I think there's some Ria is exciting one. हाँ नहीं मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहा था. यकुल, अपना कैमरा ऑन करो ना. यकुल and नरेश भाई. Yakul made such a beautiful statement. He said that he rarely has questions, but he comes every morning because he gets energy in this chat. That was such a nice statement that you made, Yakul. Thank you very much. And there are 2 characters, okay, who I love to have on the chat every time, simply for their smile. You know, Naresh Bhai and Yakul are 2 gentlemen on the group. They are eternally smiling, and it is so infectious. I don't know if you notice that. I've got a frown sometimes when I do business, right? But Yes. whenever Naresh Bhai and Yakul are there, I am just smiling with them. Wow. हम भी ग्रुप में इस वजह से ज्वाइंट होते हैं कि भाई एनर्जी मिले हमको, नॉलेज और एक्स्ट्रा जो भी शब्द मिलते हैं, हमारे कंडीशंस है, तो वो इस वजह से ज्वाइंट हो ही जाते हैं. अक्सर कोशिश वही रहती है. Your inner peace is reflecting, na?
Yes, Yeah, Pankaj. yeah. It is so nice. It's just so nice for all of us to just constantly smile and communicate. Because when you communicate with a smile, not only do you exhibit confidence, right? It actually is pretty convincing. I had a lovely debate yesterday. There were 4 panel pro and 4 against. So I spoke against a solo agency, and I was actually armed with a lot of data, but I constantly had the smile which I have right now. And I kept talking, talking, talking. So I was the last guy, the youngest in the lot, and I was the only one who's a contender because everyone was independent in terms of a view. Since I own Chrome DM, so I had a vested interest. People are a little wary क्योंकि बाकी लोग तो Correct. डिबेट कर रहे थे कि इंडिया में सिर्फ एक टीआरपी होना चाहिए या मल्टीपल होना चाहिए. Correct. तो आई वाज थिंकिंग फॉर मेरे केस में लोग डर रहे थे क्योंकि मैं तो खुद एक इंटरेस्टेड पार्टी हूँ कि अगर मैं तो बोलूंगा मल्टीपल होता कि क्रोम को लिस्टिंग हो जाए. Despite that, the question started off with objective, and after I spoke, I was the 8th speaker. Out of 8, my rank was number 8. After I spoke, everything was around Chrome. It was a complete hijack. I walked off. It was just having confidence in data and a That's all smile. it. Yes, Pankaj. So it was No, I all about a completely smile. Yeah, yeah. Yeah. So that's all. But anyway, guys, Ria is my business head for Hi, our everyone. broadcast, for our Right. business. He runs major chunk of our business in broadcast. So anyway, this might be the wrong. She had gone to Kerala for a business meeting yesterday. I Odisha. was going to ask her. अभी मैं इसी call में I was going to ask in the Nature Bright call कि रिया कल का business को sign up हुआ क्या? but then I realized business review I'll do in a separate call. So lovely. We'll chat up on that. Any more questions before we move on? Rima, 7 more days for you. Yakul, completely ignore the numbers. Keep chilling, enjoying. तुम्हारी खुद body बोलेगी when your energy levels are peaking, your body will tell you when you don't sleep well, you will feel sick. When you don't go to the washroom, you will feel sick. So allow the body to tell you everything. There is nothing that you need to listen to any machine. ठीक है जी. I have some questions, Pankaj. Hi, honey. How are you? Bolo, honey. Yes. So, Pankaj, I have, I'm not sure, but yeah, I have some questions about it. I started with juicing. Then you told me to move to OMAD. I did 1 day khichdi. It didn't work for me. Then you said, okay, just stick to salad. So then I did 1 time juice, fruit, raw fruit. And then in the evening, I'll do sorted veggies because I'm Vata, right? So raw salad nahi khaya maine, sorted veggies khaya, or I added 3 boiled eggs. Like I asked you for the protein, right? Last 2 days I had soup also, tomato soup, and yesterday I had pumpkin soup. Now I know that I've started eating. आज मैंने अपना weight किया तो weight तो मेरा 2.5 किलो बढ़ गया. That's not a concern, to be very honest, because yes, you told about From the what to what? What was it when you started this journey? 53. I started with 59 point something, and then I dropped to 53.5. Today I was 55.6. So 2 kilo बढ़ गया है, which is okay. I'm not concerned about weight, but my thing is, one, my energy is oscillating. So maybe your logic of saying गड़गड़ चल रहा है अभी वो हो रहा होगा, because with my energy, my moods are also like गड़गड़, right? मेरे को लग रहा है मेरा गट क्लीन नहीं हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो मैंने कैस्टर ऑयल लिया एक दिन, राइट? द डे यू टोल्ड मी, नेक्स्ट डे आई हैड कैस्टर ऑयल. और मुझे सारा दिन इतना अनकंफर्टेबल गया कि मेरे को अगले दिन हिम्मत नहीं हुआ कैस्टर ऑयल लेने का. आई हैड 2 स्पून विद 3 ग्लासेस ऑफ वार्म वाटर. बट सीरियसली मुझे ऐसा लगता है मैं इतना फ्रूट्स और इतना रॉ खा रही हूँ, वो फाइबर जा कहाँ रहा है, क्लीन तो हो नहीं रहा पेट. मतलब ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट गोइंग टू वॉशरूम एट ऑल, आई एम गोइंग देयर, बट आई एम नॉट फीलिंग दैट. होता ना कि जब आप गट क्लीन करके आओ तो आपको लगता है अरे वाह इट्स सो रिलैक्सिंग, वैसा वाला फीलिंग ही नहीं आया मेरे को. इट्स बीन 16-17 days. आई नो आई एम काइंड ऑफ क्रिपिंग अबाउट इट, बट मुझे लग रहा है मैं कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ. मतलब देयर समथिंग रॉन्ग दैट आई एम डूइंग. कल फिर मैंने एग भी नहीं खाए, जस्ट थिंकिंग कि हो सकता है एग नहीं खाने चाहिए, तो मैंने कल एग भी अवॉइड किया, सिर्फ सूप पिया और सैलेड खाया. सैलेड ऑल्सो हैड लेट्यूस एंड पोटैटो, दैट्स इट. एंड दैट टू सॉर्टेड, नथिंग रॉ. क्योंकि मुझे पता है द वेजीज यू टोल्ड मी स्पेसिफिकली की वाता है तो कच्चा कुछ नहीं खाना है. I'm sorting everything So in I'm not ghee. getting your question. What is the challenge? You're not feeling energetic. One is you that want- my gut is not cleaning up properly, and the oscillations of energy and moods is something. Yeah, It's a worrisome thing for me. Have you done the enema? No, I have not. Do that.
Okay. Vata के लिए make sure you do salt enemas. Add some iodized salt, a spoon in 1 liter of water. You'll be sorted. Can you come again? Sorry, I missed it. Add 2 salted enemas. Two salted enemas. Do salted Okay. enemas. It मैंने basically किया means नहीं है that कभी, but okay. नहीं कुछ nothing. Relax. Castor oil would not work basically, right? If I try to do it again. I'm sorry? Castor oil would not work if I try to You do said it you again. felt uncomfortable, not working for you. हाँ मतलब I was home till 3-4 hours after 3 hours after having it. फिर उसके बाद I had to go to work. In my work meetings and throughout, मतलब या तो if I go to the washroom and clean up, वो हुआ 1-2 बार, loogies हुए 2 बार, but throughout the day I was so uncomfortable as if something has gone into the system which is not liking. Just note down 2 things. One is do your casters. Okay, I've got a VIP call. Just 1 second. Okay. 1 second. So what I was saying, if you guys are hearing, that Yeah. listen to the body. There are 2-3 things that you need to do. और ये सबके लिए है, right? अब मैं बता रहा हूँ, आराम से समझो एक बार. हनी खंडूजा, हाँ जी. जीरा, नमक. Can you hear me? जीरा. Yeah. I can see जीरा, Not the नमक. जीरा नहीं, नमक अभी नमक रहने दे. जीरा, धनिया और सौंफ 3 आइटम होने चाहिए घर पे. हाँ तीनों हैं. ठीक है. रात को ऑल्टरनेट, एक दिन जीरा, एक दिन धनिया, एक दिन सौंफ. 1 चम्मच पानी में भिगो के छोड़ दो रात को. Okay. ठीक है. सुबह व्हेन यू वेक अप वो पानी अब्सॉर्ब कर चुका होगा सौंफ को, जीरा को या धनिया को. एवरी डे डिफरेंट. ठीक है. सेम चीज नहीं करनी. आज अगर जीरा किया तो 3 दिन बाद जीरा, आज अगर सौंफ किया तो उसके 3 दिन बाद सौंफ. राइट. Yeah, alternate days. Right. Alternately, it's a sequence of 3 or 4 days. You have जीरा, सौंफ, अजवाइन. अच्छे से चम्मच भरो और उसको निवाए पानी में डाल दो. सुबह तक वो डिसॉल्व हो जाएगा. मॉर्निंग में हाँ जी. यू ड्रिंक दैट पानी. उसमें पहले 1 ग्लास है वो ठंडा हो गया रूम टेम्परेचर. यू गेट 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर, मिक्स द 2 ताकि निवाया हो जाए. Okay. 2, 3, 4 ग्लास पियो. और अगर जब तक उल्टी आने का होना है, 4 ग्लास है तो 5 पियो, 5 है तो 6 पियो. कैपेसिटी 3 ग्लास है तो 4 पियो, 1 ग्लास एक्स्ट्रा पियो कैपेसिटी से. ड्रिंक दैट एंड देन ड्रिंक मोर वाटर एंड देन डू ताड़ासन. Okay. Notice ताड़ासन. Yeah. I know that. This is the ताड़ासन. Yeah, got it. You do ताड़ासन. Okay. अब ये एक मिनी लघु शंखा प्रक्षालनन हो जाएगा. ओके. वात दोष के जितने भी लोग हैं उनको हमेशा इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम रहता है और वो रहेगा. उसका हल सिर्फ एक है कि आप इंटेस्टाइन में पानी पंप करो. द मोमेंट यू पंप वाटर, it will release the air pockets in your intestine, which is the root cause of all your problems in life. Okay. So you drink water 1 glass more than what you can even think of drinking. Okay, got it. मतलब 4 ग्लास पिए, 5 पी लिए 6, उल्टी का माहौल बन जाए. When you feel bad, उसको स्ट्रेच करता है. अब why am I making you feel bad? Say why. Why? Because जब बॉडी में तुम ज्यादा पानी डालोगे, वो तुम्हारा it won't go into your bladder, the body will reject it. या तो उल्टी आएगी. Yeah. या अगर उल्टी नहीं आए, it will go into the large intestine. If it Okay. goes into the large intestine, it will help you clean it. क्योंकि intestine में जो गया बाहर भी निकलना पड़ेगा. Right, got it. That's it. So अब दूसरा प्लेन पानी में कर लेते. सौंफ का पानी क्यों? Again ask me why. Why? क्योंकि प्लेन पानी
का रिजेक्ट होने का चांस कम है, फ्लेवर्ड सौंफ जीरा अजवाइन जल्दी रिजेक्ट होगा, दैट विल गो फास्टर इनटू योर इंटेस्टाइन मोर। इसलिए लघु शंका प्रक्षालना भी करते हैं, उसके लिए जो सबसे पहले इंग्रेडिएंट बताते हैं किसी भी सेंटर में, वो नमक बताते हैं, बिकॉज सॉल्ट गेट्स थ्रोन आउट। आंवला, राइट, यू आर अ वाता, नमक तुम्हारे लिए अच्छा है, नमक तुम्हें पसंद है, खाना Right. खाने में भी तुम्हें अच्छा लगता होगा नमक ऊपर छिड़कना, राइट, understand? So you have your salt enemas, you have your 3 days of what I told you, and once every week, once in a week, you do a mini लघु शंका प्रक्षालना, which means 1.5-2 लीटर पानी निभाया, उसमें नमक मिक्स कर लिया, जितने भी बात दोष है हफ्ते में 2 हफ्ते में एक दिन जरूर करना चाहिए मिनी लघु शंका प्रक्षालना। जस्ट गूगल LSP लघु शंका प्रक्षालना, संडे को करो, हर संडे करो, जिस दिन लगे कि हेवीनेस हो रही है, यू आर फीलिंग बैड इन योर टमी, जस्ट डू अ ब्लडी लघु शंका प्रक्षालना। 6 ग्लास नमक का पानी पी लो, ताड़ासन करो, लेफ्ट राइट कोबरा, stretch twitch, सारा system will get cleaned up like a bloody like a, I don't know what's the word for clean up, like it's going to be like a thorough clean up, you will feel like God। लेकिन वो हर हफ्ते को, क्योंकि बॉडी में क्या है, तुम्हारी टेंडेंसी है वाता में कि जहां जहां इंटेस्टाइन में पानी अटकने की, हवा अटकने की है, उसको साफ करते रहो। जो कपा लोग हैं कभी गलती से मत कर लेना। So this What about जिंदगी में pitas? नमक What का about लघु शंका pitas? Do we प्रक्षालना मत have करना। that jeera pani and all that? हाँ, जीरा पानी तो, जीरा तो सबके लिए अमृत है, जीरा तो नेचुरल है, जीरा सौंफ और धनिया, इसलिए मैंने कोई बॉडी टाइप नहीं बताया। जीरा सौंफ धनिया का पानी रात को भिगो, इवन ये तुम भी भिगो रात को, और सुबह पी लो, और पेट अजवाइन साफ बोला होगा। था, अजवाइन, जीरा, सौंफ, अजवाइन भी बहुत बढ़िया है, अजवाइन, जीरा, सौंफ, धनिया, कोई भी दो भिगो। चीजों combination Yeah, भिगोने my parents have it. I think they quite swear by it. So you have all of that in rotation, ये सब कुछ रोटेशन में लेना है, एक दिन नहीं लेना, और लघु शंका प्रक्षालना जरूर करना। इसलिए मैं कहता हूँ फॉलो योर प्रोटोकॉल एज पर बॉडी टाइप। ये जो अनाड़ी होते हैं ना, ये कॉल सेंटर में सबको LSP पे लगा दे, बेचारे कफे की तो जान निकल जाएगी, नमक इतना पी के BP बढ़ जाएगा। इसलिए ओनली फॉर वाता। हनी, यू ड्रिंक नमक का पानी 4, 6, 8, 10 गिलास, थोड़ी उकलाई आएगी, लेकिन वो जितना गया है 110% निकलेगा। 100 तो निकलेगा ही निकलेगा, उसके 10 पुराने कुछ निकालेगा वो। उल्टी आएगी भी बहुत अच्छा है, उल्टी में घबराने का कभी नहीं। When you're puking it out, that is called कुंजल क्रिया। I have done it, yes. वो नेचुरल कुंजल हो जाएगा तुम्हारा। So today, if you are going to office, great. If you are खाली पेट right now and you are not going to office, you can do, but it's too late now, yaar. You are in Singapore, right? So then, No, I'm in Bangalore and it's terribly hot. So I think the weather is also irritating me a lot, and I know that अभी will एक be काम कर, if you are feeling heavy, just take bloody 2-3 glasses of juice, take 2-3 glasses of warm water, just Google लघु शंका प्रक्षालना, ठीक है? नेट पे LSP, उसके 8 आसन होते हैं, 5 आसन होते हैं, ठीक है? ताड़ आसन, लेफ्ट राइट ट्विस्ट कोबरा, अभी कर ले। 2 ग्लास जूस पी, ट्विस्ट मार, 2 ग्लास पानी पी, ट्विस्ट मारो, फिर 2 ग्लास पियो, ट्विस्ट करो, sit in a malasan and you see what happens. You will start the cleansing process again. So I have already had 2 glasses of juice right now. I can do that. But what I'm understanding is ये जो once in a week LSP है, ये मुझे after 21 days करना है। अभी के लिए मुझे regularly alternate days जीरा, धनिया and सौंफ का पानी पीना है। What is your protocol? What are you following right now? Are you eating or My raw? protocol right now is I'm eating raw fruit and sorted vegetables as salad in the evening along with boiled eggs and soup. नहीं, अभी एक बंद कर दे थोड़ा टाइम के लिए। एक बंद कर दूं, soup and salads I can carry on. You carry on with your soup and salads, and since you're doing soups and salads, ये लघु शंका प्रक्षालना है, वो भी कर लो, उससे हमारा सिस्टम साफ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। LSP से भूख लगेगी तो सूप सैलेड का इंटेक बढ़ जाएगा। Are you doing meals, one meal or no? No, I'm not doing any meals. It's just that, but yeah, I'm eating a lot of raw fruits like mango, apple, watermelon. Yeah, do that. Keep eating a lot of raw. और अभी लघु शंका प्रक्षालना के बाद अगर भूख लगेगी तो you can start off with your खिचड़ी विचड़ी and all. Okay. And this जीरा धनिया सौंफ ये पानी स्ट्रेन करना है, right? वो स्ट्रेन करने की जरूरत ही नहीं है, वो जीरा नीचे बैठ जाएगा तो ऊपर से पानी निकल जाएगा। अच्छा, ठीक है। गर्म पानी में मिक्स करके डिसॉल्व होगा। हाँ, गर्म पानी पी के कैपेसिटी से 20-30% एक्स्ट्रा, एक नहीं 2 ग्लास एक्स्ट्रा पियो। ठीक है। So I carry on with this. No castor oil, no enema while I'm doing all this, right?
You don't, LFT I mean, करना है if बस. you're saying you're scared of enema, two castrol oil you're not happy with, so I'm giving you another option which is slightly Yeah. more lengthy, but equally 100% effective. ठीक है, I'll do that. You were saying something about खिचड़ी. हाँ, I was saying खिचड़ी कैसे बनानी है नरेश भाई बताएंगे. खिचड़ी तो I'll definitely connect with you, नरेश भाई. क्योंकि Okay. ऐसा नहीं है कि खिचड़ी आता नहीं है, मैं बहुत खिचड़ी बनाती हूँ, बट उस दिन जब खिचड़ी बनाया, I don't know, my body just didn't like it. मतलब सारा दिन मेरे को पंकज would tell you, Pankaj had a call with me in the evening. मैंने लिख के भेजा इनको, I have a terrible stomach ache. मुझे नहीं पता क्या होने वाला है. खिचड़ी तो बेस्ट है पेट के लिए, और रात को मुझे बहुत खाते हैं. पसंद है खिचड़ी, बहुत, और मैं बहुत वैरायटी का खिचड़ी बनाती हूँ, बट उस दिन क्या गड़बड़ हुआ, I don't know. Okay. उसको But हम yeah, भिगो I के like रखते to हैं. know. अच्छा, आप भिगो भिगो के के रखते हैं? हाँ, आधा घंटा उसको भिगो के रखते हैं, आधा घंटा घंटा भिगो के रखें तो उससे ज्यादा वो ग्रेवी भी वो बनेगी अच्छी, और अच्छी बनती है, टेस्ट में भी अच्छी बनती है. हाँ. I'll connect with you for sure. Okay, Very sure. sure that you will tell me Yeah. amazing recipe. But yes, I'll remember. ये soak करके रखना है half an hour. हम नहीं करते हैं. I'll try हाँ, that. सोप से बहुत फर्क पड़ता है. Honey, you're on an ideal way. What's your weight? Ideal से थोड़ा सा ऊपर है. If you see the BMI element, हाँ, वो I'm 2-3 किलो almost. चला जाएगा. 2-3 हाँ. किलो चला जाएगा. Don't worry. तुम 2-3 किलो जाने के लिए ना, तुम्हारा अभी कितना है? 50 what? मेरा 53.5 हो गया अभी. You want to be 50 is your ideal weight. I'm good with 51, 51, 52, 50 पे तो. हाँ, And so you know let's what come to I'm about- scared अभी of, सुन, because don't- I'm scared don't- of is losing the muscle mass, the What do you protein want to and do? You're water. going for a bloody wrestling championship watch. Very nonsense. Does not matter. Muscle, the body has a very good muscle memory. Whatever muscle you lose comes back in 3 days only. Okay. इसलिए there is nothing that will go permanently. Muscle mass comes back. So you try to go down till about अभी 53 है. Try to come to about 49 or 50 over the next week 10 days with raw and juicing. बहुत कभी भूख लगी कर लिए. जब 49 हो जाएगा, फिर उसके बाद water retention gain करके तुम्हारा 51 पे आ जाएगा. You have to go a little down, you know. So that's okay. Don't worry, it'll happen. And then you go back Yeah. to your training, gym training, workout, whatever. Yeah, I'm doing regular yoga, which is helping. And once in a week, I'll do strength training, once in a week kind. But generally yoga. But one thing for sure I've felt, Pankaj, in last 10 days is I feel a lot more thirsty. मतलब ऐसा लगता है कि मुझे हर टाइम प्यास ही लगती रहती है. And my mouth would always be dry. So I Correct. feel So very good. the water. Excellent. What is Vata? Earth and water? No. Earth and no, it's No, not that earth is and Kapha. water. What is fire? Pitta. What is Vata? Vata is earth, Air air and and space. air. Yeah, Air and space. yeah. तो अगर वाता ज्यादा है तो इसका मतलब एयर एंड स्पेस ज्यादा है, कफा कम है, इसका मतलब पानी कम है बॉडी में. इसका मतलब बॉडी को प्यास लगनी चाहिए. तो ये तो बहुत अच्छी बात है. इसका मतलब तुम्हारा जो प्रकृति वाता की है उसके अनुसार बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है. Yeah. So when you are in ideal health parameter, your body will ask for the exact perfect amount of water. I know so many people on Vata who need a bloody glass of water every hour. I know some kapas जो पूरा दिन पानी नहीं पीते. 1 गिलास पानी पीते हैं बस पूरा दिन शांत है. उनकी बॉडी अलग है, उनको पानी की जरूरत नहीं है. Right. I'm feeling the need of water a lot. So listen to the body. The body wants water, give it water. Enjoy the body. Let the body guide you what it wants. Yeah, I think that was a very important part. बहुत नींद आएगी, एकदम से इतनी नींद आएगी. Sitting in the office, I was like, okay, somebody just let me get to the bed and let me sleep. और कभी क्या होगा रात को एकदम 10 बजे you are feeling like you're fresh, you want to go for a run. So listen to the body. धीरे that गड़ is happening. थोड़ा टाइम लगेगा. Where you become a sadhu. साधु संत बनने में आसान नहीं होता. साधु संत वो होता है जो 9 बजे आंख बंद कर ली, 4 बजे खोल ली और पूरा दिन टकाटक, राइट. उसमें स्टेज में टाइम लगेगा क्योंकि हम लोग रहते हैं शहरों में, राइट. We sit in hotels, we have business meetings, we have stress, we have all kinds of nonsense around us. हम जंगल में तो रहते नहीं, इसलिए परफेक्ट नहीं हो सकते. इसलिए जब भी हम वायलेट करेंगे ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, यकुल प्रोटीन के नाम पे हम अंडे खा लेते हैं, फिर गड़. तो प्रोटीन के लिए क्या खाऊं बताओ आप, सत्तू पी लूं? यकुल, sorry, honey, how old are you? 37. अभी you think are you a growing child?
No. कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा जितना प्रोटीन इंटेक है, भगवान ने अगर केला खाओगे ना तो केला में भी सब कुछ है। तुम नारियल का पानी पियोगे, हर चीज में सब कुछ है। डू नॉट द फैक्ट दैट तुम्हारे मन में एक बह है कि मेरे में कुछ कमी है, इसलिए मैं अंडे खा लूं। उस अंडे में 1 ग्राम प्रोटीन के साथ तुम 100 ग्राम जहर खाते हो। आई डोंट नो ब्लडी इंडिया में कहाँ ऑर्गेनिक अंडे मिलते हैं, ब्लडी ऑल नकली अंडे। इफ यू गेटिंग ऑर्गेनिक अंडे की मुर्गी भी अपनी, फार्म भी अपना, उसका अंडा भी अच्छा, तो अलग बात है। हाँ, हैव एन एग इफ यू वांट टू हैव इट एज जंक, एज फन, बट कभी Yeah. उसको हेल्थ फूड समझ के मत खा लेना। Okay. ठीक है, सेम थिंग विद अनाज। अनाज में जितने भी रोटी है, जितना भी ये सॉफ्ट आटा है, वो क्या है? कुछ नहीं है, वो ग्लूटन है, गोंद है, वो चिपकता है Gluten आटे में है, भर जाता है। Understand? Yeah. Riya, you can shift the camera to our friend Vikram Jaran. So, then it's okay. I'm kidding. I'm keeping it on the humor side. But ये जो अनाज है, जितना भी आटा वाटा है, ये बना था आज से 100 साल पहले, क्योंकि उस समय जो वॉर चल रही थी, they wanted to feed the world. तो एक शॉर्टकट एक आइटम बना दिया जिसको कहते हैं गेहूं, जो सबसे नुकसानदेह चीज है। उससे पहले सब मोटा अनाज होता था, जो शरीर में चिपकता नहीं है। इसलिए Right. स्पेशली फॉर यू हनी, डोंट वरी अबाउट द प्रोटीन। अगर तेरे शरीर में प्रोटीन इंटेक कम है, कार्ब कम है, फैट कम है, या वट एवर माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट, फाइबर, विटामिन, गिव ब्लडी नेम्स ABCDEF, ऑल काइंड्स ऑफ ब्लडी MRI NRI। अरे शरीर बोलेगा, रिपोर्ट थोड़ा ना बोलेगी। रिपोर्ट सब दुकानदारी है। I get that. Okay, so don't Cool. worry about your food. Enjoy your food when you are hungry. When you do a Laghu Shankha Prakshalana, and when you do a salt water cleanse or a garlic cleanse or a dhania cleanse, whatever cleanse I'm telling you, कभी कभी बहुत भयंकर भूख लगेगी। अब 2 टाइप की भूख होती है, एक तो क्रेविंग होती है, मन कर रहा है कुछ खाने का। दूसरा एक जेन्युइन भूख लगेगी और वाता, देन आई एम सेइंग यू हैव योर खिचड़ी, योर चावल, योर फ्राइड राइस, यू Okay. गो बैक टू ओमैट, वो बॉडी पचा लेगी। Okay. Okay. Got it. और तुम जब ये सोच के खाओगे कि नहीं यार मेरा प्रोटीन कम हो रहा है तो मैं ये खा लूं, इट नेवर वर्क। Yeah, I Listen get to the that. body. Listen to the Yeah. body. तो Got नरेश it. टीम भाई, Pretty, नॉर्मली पंकज pretty लोग बोलते helpful. हैं कि वेट का 100 ग्राम्स, मतलब जितना आपका वेट है उतने ग्राम्स खाना चाहिए, इजंट इट? वो जिम में कहते हैं वो खाना चाहिए, लेकिन मैं ये तो बोल रहा हूँ कि प्रोटीन का इंटेक हर सोर्स से निकल जाता है। आप सब्जी खा रहे हो, फल खा रहे हो, अब ये थोड़ा है कि सब्जी है तो उसमें प्रोटीन है ही नहीं, उसमें सिर्फ कार्ब है या सिर्फ फाइबर है। हर चीज में थोड़ा थोड़ा होता है। अंडे का प्रॉब्लम क्या है कि अंडे सही है गलत है आई डोंट नो, लेकिन आजकल जो अंडे मिल रहे हैं वही नकली है। ये भी है। अब पता नहीं, शायद प्रोटीन होता हो अंडे में, मेरे को क्या पता, खाओ अगर है तो, लेकिन अंडा तो असली हो। करेक्ट। That is the challenge. So if you have a poultry farm and you have real chicken naturally giving you real eggs, then have it, you know. तो वो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखो इस बात का। Eat food which is good for you. ओके। Done. I think, yeah, I'll do that, Pankaj. I'll share with you the Cheers updates guys, for you it. have a super week ahead. नरेश भाई, good to see Yeah, you. Pankaj, आप just लोग want to अपना add बकवास something. करोगे। Rima, you're saying something. Sorry. Yes. Sorry, Riya, if you I guys wanted can to add. continue making the money, there's no mandate to be part of the call. You can be part of the call, you cannot be part of the call. It's up to you. Sure, That's sure. my deal. So you can, up to you, huh? Sorry, who was this? Rima. Yeah, so I was saying that I had not checked my weight since yesterday night, and I generally check it in the night time. So I checked my weight right now. So I have lost another kg. So Right. 4.8 kgs. So I'm at, देख, तूने तेरा ओपनिंग कॉल भी गलत था रीमा। यू सेड 3.8 kilos, नाउ यू गॉन टू 4.8 kilos। तेरा 1 किलो तो भी कॉल पे चला गया। no, correct. Because I didn't check it yesterday. I missed the call at 5:30. I checked in the morning yesterday at 10. And I'm very surprised because it is not going down. That 24 hours, it can actually go down by a kilo. So, डिस्कस किया ना सुबह। correct. So 1 kg भी हो सकता है। I thought 2-3 grams होता है, 200-300 grams हो होता है गया ना, जनरल। यू ओनली सेइंग 1 किलो हो गया लास्ट वन डे में। सो अंडरस्टैंड द बॉडी रिस्पॉन्ड्स। अभी 1 किलो होगा, बट वी वांट टू नॉक ऑफ अनदर 4-5 kilos or 3 kilos over the next 1 week for you to reach a new energy level. Fair. And if I remember correctly, you've had some injuries because of which you couldn't Correct. exercise for a decent set of years in between, right? Yeah, 1 year, full 1 year. हाँ, तो वो प्रॉब्लम था। So now once you get back, you'll start exercising. Once you start exercising, you'll start feeling better. Cool. Fair.
ठीक है? Yeah, thanks so much. करो, मस्त रहो, live, listen to the body. ठीक है? Yakul, you will come to a perfect normal of diabetes. It's gonna take a little time over the next few days, weeks or months. It will settle permanently. You just have to maintain it. बस where I started off कि उस चीज का ध्यान रखना कि कुछ ऐसा मत कर लेना. Let me just go down in the lift 1 second. This might just go off in case I'm repeating. The biggest challenge which I face and many of our friends face is the body becomes so potent कि 16 साल की शरीर हो जाता है ना, उसमें आदमी गलती कर बैठता है. Okay. You know, because you become so, you can do एक दिन एक पाप कर सकते हो लेकिन हफ्ते भर डेली पाप नहीं कर सकते. Okay. You getting my point? So be careful on that point. आपने बिल्कुल spot on answer दे दिया. The answer which I was looking for. हफ्ते में एक पाप कर सकते हैं. This is what I was actually. I did not want it to ask, but yes, you answered what I was looking for. Sorry, हफ्ते में एक पाप कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, पाप कर ही लो. My advice is, sorry, just 1 second. Table for 2, 5 for 5. So I'm saying पाप हफ्ते में एक तो कर ही सकते हो. मैं recommend करता हूँ करना भी चाहिए यार दोस्तों के साथ, नहीं तो लाइफ खत्म हो जाएगी. ठीक है जी. It's so बस अब important आप to chit chat with them, to spend time with them, because if you don't chit chat or spend time with them, then you know you're isolated. You should look forward to spending time with your friends. अब आपने Definitely. बोल दिया है तो it's more exciting. Sorry. Yeah. अब आपने बोल दिया है तो अब it's more exciting to do it. Like Yeah, we have the permission and approval to do that. You should enjoy life. That's what life is Yeah. all about. Yes, sir. Have fun, guys. Have fun. Okay, thank you so much, Thank you. Pankaj. Have a Thank nice you. day. Really Thank you. appreciate. Thank you, everyone. Have a great day. you. Bye-bye. Thank you. Naresh ji, I'll Bye. connect with you for a khichdi recipe. Okay. Okay, Bye. bye.